Okay, it's okay now. Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my right and Shri Arun Goel ji on my left. Shefali ji, senior officers, friends from media. Through your medium, I first of all, in this press conference, want to welcome you all. और आपके माध्यम से असम के सभी नागरिकों को हम सबका नमस्कार और अभिनंदन। जैसे कि आप सबको विदित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत असम की असेंबलीज और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट की है। इस प्रोसेस के अंतर्गत कमीशन ने असम के दौरे के विभिन्न स्टेक होल्डर्स को कंसल्टेशन करेंगे ऐसा डिसाइड किया और ड्राफ्ट प्रपोजल प्रिपेयर करने से पहले ही उनको डिस्कस करेंगे, उनकी सारे व्यूज़ लेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया। अधिकांशतः जो कमीशंस हैं वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको पब्लिक डोमेन में डालने के बाद उस पर 1 महीने का ऑब्जेक्शंस या सजेशंस मंगाने के बाद विजिट करते हैं, लेकिन हमने एक बार पहले और एक बार उसके बाद भी करेंगे ताकि प्रोसेस को और ज़्यादा पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव और सबकी सहमति से कर सकें एंड वी कैन मेक इट मोर इंक्लूसिव, मोर पार्टिसिपेटरी, सो दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड टू कम फर्स्ट। कमीशन सभी स्टेक होल्डर्स की सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल कंसर्न्स को सुनकर और यथासंभव एज फार एज पॉसिबल उनको इंटीग्रेट करते हुए, उनको समावेश करते हुए ही डिलिमिटेशन जैसी क्रिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। हमारी ये अप्रोच, हमारी जो आने वाली कार्यशैली है डिलिमिटेशन की, कि दैट वी वुड बी ऑलवेज टॉकिंग टू दी स्टेक होल्डर्स, विल बी डूइंग इट विथ ट्रांसपेरेंसी, इसी को रिफ्लेक्ट करती है और प्रदर्शित करती है। फ्रेंड्स, राजनीतिक दल लोकतंत्र में मतदाता के अपने संबंधित समूहों का, वट एवर कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रुप्स दे रिप्रेजेंट, का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे महत्वपूर्ण इंटरमीडियरीज होते हैं। दे आर वेरी क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स इन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑल्सो, हैविंग विजडम एंड पल्स ऑन द ग्राउंड टू हाईलाइट critical issues and feedback. And in addition, the civil societies, various organizations, stakeholders, संगठन, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। तो लास्ट 2 days में कमीशन ने 9 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटीज और सामाजिक एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनकी संख्या लगभग 60 के बराबर थी, और पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल एंड रीजनल, और उनके सबके विचारों को हमने बहुत ध्यान से सुना है, नोट किया है। इस दौरे में आने से पूर्व सभी राजनीतिक दलों, संगठनों या जो हमसे मिलना चाहे उसके लिए हमने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया था, उनको आमंत्रण भी दिया था। वी इन्वाइटेड देम ऑल दैट इफ हुसोएवर वांट्स टू मीट अस कैन meet us, take time. So recognized national and state parties जो हमसे मिली, उनमें just to report through you, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, असम गण परिषद, AIUDF, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल, and 3 more registered political parties, namely Assam Jatiya Parishad, Lok Raksha Party and Raizor Dal, also met the commission and submitted their representations. असम राज्य के विभिन्न दूर दराज क्षेत्रों से, काफ़ी दूर से, जो भी लोअर असम, अपर असम, नॉर्थ साउथ से लगभग 60 सिविल ऑर्गेनाइजेशंस और सामाजिक संगठनों ने कमीशन से मुलाकात की और अपने सुझाव हमारे सामने रखे। इन संगठनों में मुख्यतः बोडोलैंड ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट्स यूनियंस,
विभिन्न समुदायों जैसे तीवा, गोरखा, अहोम, अनुसूचित जाति, मोरौन, विष्णुप्रिया, मनुपुरी, मैती, गारो आदि के समूह भी शामिल हैं। टी पीपल्स फोरम, वेरियस सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, जातीय संसद, साहित्य सभा तथा महिला संगठनों ने भी अपने सुझाव कमीशन के समक्ष रखे और ये सभी संगठन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द असम हैं, जो अपर असम, लोअर असम, नॉर्थ एंड सेंट्रल असम, हिल एरियाज, प्लेन एरियाज सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो वी हैव बीन एबल टू गेट वेरी गुड सजेशंस एंड कमेंट्स ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्टेट। आपके माध्यम से इन सभी पार्टीज़ को और सभी संगठनों को हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत ही जो बहुत ही उनके दिल के मुद्दे थे वो हमें बताए, जिसको हम नोट कर सके। और एंड लेट मी एडमिट दैट देयर सजेशंस हैव ग्रेटली हेल्प्ड अस, वेरी ग्रेटली इट हैज़ हेल्प्ड अस, इट हैज़ इम्प्रूव्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज विच आर इन्वॉल्व इन द exercise which we are taking, a critical and a very complex exercise. इस बीच में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और चीफ सेक्रेटरी और स्टेट के सीनियर सेक्रेटरीज से भी बात की, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। और इसमें एक मुख्य बात ये थी, हमने जो डीएम्स डीसीज को कही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे मिलने नहीं आ सके, दे मे नॉट हैव ए क्रिटिकल मास टू हैव कम टू अस। तो ऐसे लोग जो हमारे पास तक नहीं आ पाए हैं और उनके पास आते हैं, तो उनके क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनकी क्या सोचना है, ये अपने माध्यम से हमारे पास पहुंचाएं। सो DCs हैव बीन डायरेक्टेड टू दैट, टू चैनलाइज द एस्पिरेशंस एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू कम टू अस। सो फ्रेंड्स, अब आप जानना चाहेंगे कि जो लोग हमसे मिले उन्होंने मुख्यतः क्या क्या कहा। So I want to report again through you what have been the broadly suggestions of the representations which we have received. I am just naming a few major ones, not going into individuals. उन्होंने कहा कि आप सेंसस 2001 की पॉपुलेशन फिगर्स क्यों ले रहे हैं, इसके बदले में लेटेस्ट सेंसस फिगर्स लीजिए। ये दिस वाज वन सजेशन। फिर ये भी एक सजेशन था कि आप जो अभी असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर फिक्स रख रहे हैं, तो इस नंबर को बढ़ाने की क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? वाई आर यू कीपिंग दिस नंबर्स कांस्टेंट एंड वाई दिस कैन बी इंक्रीज? नॉट एवरीबडी, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट these suggestions are having conflicting and competing claims. Some were in favor, some were in against. But I am saying these were the issues on which people spoke. So some said 2001 is okay, some said it is not okay. Some said that it should be increased, some said that let us continue in the present system. Then people invariably asked for adequate representation of SCs and STs constituencies. There was one suggestion which said that लोअर असम जहाँ पर जनसंख्या की कम वृद्धि हुई है और एरियाज के मुकाबले में, वहाँ उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए ACPCs में 30% वेरिएशन का प्रावधान होना चाहिए, इसको बढ़ाइए, ओनली इन अपर असम। देन ये भी प्रश्न लोगों ने पूछा और कहा कि ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो 2008 में बंद हुई थी, तो इसको आपने क्यों तुरंत से शुरू किया? फिर डिलिमिटेशन ऑलरेडी ड्यू इन 2026 अक्रॉस द कंट्री, तो असम डिलिमिटेशन आप क्यों कर रहे हैं 2026 के बाद, क्यों नहीं कर सकते? नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट डिलिमिटेशन कमीशन एज वाज डन इन J&K, तो वाई इलेक्शन कमीशन इज डूइंग इट? हो सकता है ये सब प्रश्न आप लोग भी पूछने वाले हो मुझसे, जिनको मैं पहले ही अपने से लिस्ट कर रहा हूँ और जवाब भी दूंगा इनका। देन impact of delimitation exercise on the 6th scheduled area and how do we kind of reconcile this these concerns. And कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि कोई ड्राफ्ट तो पहले से ही बन के तैयार है और वो ड्राफ्ट सब में घूम रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो पहले से ही बन गया है और या पहले से कोई पुराना ड्राफ्ट है. पीपल टॉक्ड अबाउट सम ड्राफ्ट विच इज़ in circulation that it will happen, this will be reserved, this will not be reserved, this is what will happen. So I thought these are the major issues through which
what others said. There were other representations which were very specific to the constituencies, that reserve this constituency for us, give us the representation, merge this block with this block, so that our regional aspirations can get proper expression in the political process. So those I am not discussing, those are individual things, list would become very large. But these were broadly the issues which were raised. So friends, मैं अब इन बिंदुओं का जवाब भी आपको देने की कोशिश करता हूँ. इससे पहले मैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के फैक्चुअल डिटेल्स और हाइलाइट्स से आपको अवगत कराऊं. I want to emphasize and assure all of you, and through your medium, which is a very powerful medium, and which is actually the only medium for us to reach to the masses, that we will consider with great care and with due consideration all the suggestions which have been received by us, and as far as possible कानूनी दायरे में रहते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के तहत सभी सजेशंस को डिलिमिटेशन प्रपोजल में समावेशित करने का, इंक्लूड करने का, जगह देने का, एकोमोडेट करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे, बिल्कुल सिंसियर प्रयास करेंगे. द कंसल्टेशन, let me admit here and emphasize, during the entire process would be the key. Disclosures and consultation, so that इतने दिन के बाद जो ये एक्सरसाइज हो रही है ये सबको पता रहे, कोई रूमर्स की गुंजाइश ना रहे, और सबकी भावनाएं और बातें हमारे पास तक पहुंचती रहें. हम खुले दिमाग से, with open mind, we will consider all the things. So now I'll, after this, try and give answers to what questions have been raised. So first of all, about why not a separate delimitation commission and why election commission is doing it. So friends, as you are aware, असम का राज्य का परिसीमन डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा शुरू किया गया था, जो कि प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही विभिन्न कारणों से सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन डिफर कर दिया गया. यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस. नाउ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट this deferment can be rescinded, and 28 February 2020 को ऑनरेबल महामहिम राष्ट्रपति द्वारा डिफरमेंट ऑर्डर को निरस्त कर दिया, मीनिंग thereby that the delimitation exercise can start. The jurisdiction of the commission, why not delimitation commission, why the commission? The jurisdiction of the commission has been triggered by the 15th November 2020 request and letter of the Ministry of Law and Justice to start the process of delimitation under Section 8A of the Representation of Peoples Act. So Section 8A of the Representation of Peoples Act prescribes and provides that Section 9(1) and read along with Section 9(1)(c) and D of the Delimitation Act mandates the Election Commission of India to do the exercise of delimitation for the 4 states here, as and when it is so mandated and as and when the deferment is rescinded. And in this case, this trigger happened when the Ministry of Law wrote to us on 15th November 2022. Section 8A was inserted with a particular objective, and the objective was that whenever the situation becomes normal, the Election Commission can complete the process of delimitation, and constitution of a separate delimitation commission for this purpose may not be necessary, because it has happened in all other parts of the country. Therefore, wherever it is remaining, this specific section was inserted. And Section 8A provides, I'll just quote this, if the President is satisfied that the situation and the conditions prevailing in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland are conducive for the conduct of delimitation exercise,
he may by order rescind the deferment order issued under the provisions of Section 10A of the Delimitation Act 2002 in relation to that particular state. So in relation to the state of Assam, this order has been rescinded, and therefore we have started our exercise. And language of subsection 2 says that as soon as may be after the deferment order in respect of the state is rescinded under section 1, the election commission may by order determine the number of constituencies within the state. And therefore, ECI is exactly working on the responsibilities assigned to it under the existing legal framework. The second major question was as to why 2001 and why the seats are not increased. फ्रेंड्स, इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये एक्सरसाइज है ये एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस के अंतर्गत है और इसके बिना हो भी नहीं सकती है. इट हैज़ टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल बेस. Article 171 of the Constitution of India provides for the basis of census year. This is the Constitution article which provides for the basis of census year and readjustment of seats, the number of assembly and parliamentary constituencies will remain the same. Let me read this relevant provision for you. Article 170, subclause 3. Upon the completion of each census, please mark my word, each census, the total number of seats in the legislative assembly of each state and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted. So after each census, it will be readjusted by such authority and in such manner as Parliament by law prescribe. So in this case, under this article, Parliament by law has prescribed Section 8A of Representations of People Act that it must be done by the Election Commission. So this is what it is. And secondly, so there are two parts to the delimitation. One is after every census redrawing the boundaries of the existing constituencies. This is what it provides. So this is exactly the exercise which is happening. And now, what this further provides, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026, when people asked us कि आप 2026 के बाद क्यों नहीं कर रहे, so this is I am coming to the next step. Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026, so 21 census is not yet complete, and it is not any other census. It is only the census which is taken after the year 2026. It shall not be necessary to readjust. जब 2026 के बाद में एक सेंसस आ जाएगा तो फिर रीएडजस्टमेंट the total number of seats in the legislative assembly of each state as readjusted on the basis of 1971 census. It will not be necessary. The division of such a state into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of 2001 census under this clause. So it is exactly what we are taking the exercise is strictly as per the constitutional and legal provisions in which we have no say, in which nobody has a say. So friends, विधानसभा की इस प्रकार 126 और लोकसभा की 14 सीटें निर्धारित रहेंगी और इन्हीं के भीतर एग्जिस्टिंग लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वी विल ओनली इन द फर्स्ट फेज रीएडजस्ट द बाउंड्रीज. एज रिगार्ड्स द रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स का रिजर्वेशन अगेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 330 and 332. These are such critical things that it draws its strength from one or the other article of the Constitution or the legal framework, which says that this will be done on the basis of proportion of the population of SCs and STs to the total population where their population is largest in number. So you first determine the SC/ST population and then also see where in which constituency their population is largest. And again,
This is exactly in terms of Section 8A of the RP Act 1950, Section 9, 1, C and D, Article 82, 170, 330 and 332 of the Constitution. There were concerns about due representation of various groups and their political rights as regards the SCs, STs and others also. So as regards the suggestions of others, other than SC, STs for reservations, this is not permissible. But the suggestions and aspirations at times conflicting and competing और एक दूसरे से एक ही विषय पे अलग अलग राय भी लोगों की थी, नेचुरल है, स्वाभाविक है. We have all heard them and we have duly recorded it. And they are very constructive suggestions. We'll give due regard to all of them. And when we do the readjustments, realignment, so we'll keep in mind the principles, broad principles I'm telling you now, the suggestions given by all representatives, geographical area, and different factors such as boundaries of the existing administrative units, connectivity, geographical compactness, physical features, public conveniences, etc. All these factors go, and it's a holistic view which is taken, which is in addition to the population and the geographical area. And this will be done on the basis of units administrative existing as on 1st January 2023. विधानसभा और लोकसभा का परिसमन करते समय बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स